Hello students, good afternoon. Time to complete our workbook. So we are going to complete our workbook, that is the major main part. So let us solve our page number 68 from the mathematics textbook part 2, and our chapter is the measurement, chapter number 12. Let us solve the concept 12.1, multiply and divide lengths, weights and capacities. So here we do have recall section, multiple choice question. Example first, millimeter is a unit of. So millimeter, मीटर जब आता है तो ये मीटर होता है हमारा लेंथ के बारे में. So it is the unit of a length. So our correct option is the option D. So here we have to write down the D. नाउ किलोग्राम, किलोग्राम की बात आती है तो यह बात आती है हमारी वेट के बारे में. सो किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ वेट. सो हियर आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट. सो यू हैव टू राइट डाउन ए हियर. नाउ लीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये फिर से हमारा आता है कैपेसिटी के बारे में. तो यहाँ पर इट्स अ यूनिट ऑफ कैपेसिटी. सो यहाँ पर आवर ऑप्शन इज द सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट अस सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 2 kilometers. तो जब भी we know that whenever we have to convert the kilometer into the meter, so we have to multiply the kilometer value by 1000, and whenever we multiply the 2 by 1000, our answer is the 2000 meter. So our correct option is the option C. So you have to write down the C. Now 7 liter, लीटर का जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिलीलीटर में, तब हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 1000 से. सो यहाँ पर 7 लीटर का कन्वर्ट होगा मिलीलीटर में, तो उसको 7 इंटू 1000, दैट इज द 7000, बट 7000 मिलीलीटर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द अगेन ऑप्शन सी. नाउ द नेक्स्ट वन, 6th एग्जाम्पल, 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर का जब हमें कन्वर्ट करना होता है मिलीमीटर में, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेंटीमीटर वैल्यू बाय 10. Okay, so 4 multiplied by 10, that is the 40. So it's a 40 millimeter. So our correct option is the option A. Now fill in the blanks. To convert measures from smaller unit to larger unit, we divide. Okay, smaller unit से जब हम larger unit में करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको divide करते हैं. We divide. Okay, and to convert the measures from larger unit to smaller unit, we multiply. हम क्या करते हैं, उस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं. So whenever we convert the larger unit into the smaller unit, we multiply. Okay, here that is the 1 mm represent. So 1 mm कितना रिप्रेजेंट करेगा हमारा, 1 mm रिप्रेजेंट करेगा हमारा सेंटीमीटर में. तो यहाँ पर होगा हमारा 1/10. फ्रैक्शन मिला तो हमारा 1/10 आएगा, क्योंकि mm जब हम स्मॉलर से लार्जर करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो दैट इज़ द 1, और सेंटीमीटर करने के लिए हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं. दैट इज़ द 1/10 सेंटीमीटर. और पॉइंट में या डेसिमल में लिखना चाहते हो तो ये आएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस कन्वर्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. कन्वर्ट 4000 मिलीलीटर टू द लीटर. व्हेनेवर वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर टू लार्जर, तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो हमें कन्वर्ट करने हैं 4000 मिलीलीटर को लीटर में, तब हमें क्या करना होगा, 4000 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से. तो जब भी हम उसको डिवाइड करते हैं 1000 से, तो देखो 0 0 0 0 0 गेट कैंसल. सो आवर आंसर इज द 4 लीटर. नाउ कन्वर्ट 3000 ग्राम टू द किलोग्राम. ग्राम मतलब लोअर है, दैट इज अ स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में या बिगर यूनिट पे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो 3000 ग्राम इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 1000. सो आवर आंसर इज द 3 किलोग्राम. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 4000 मीटर टू द किलोमीटर. सो अगेन वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, बट यहाँ पर मीटर का किलोमीटर में करना है, तो हम क्या करते हैं, 4000 मीटर. सो दैट इज द 4000 डिवाइड बाय 1000. सो आवर आंसर इज द 4 किलोमीटर. व्हाट इज आवर आंसर इज द 4 किलोमीटर. नाउ हियर वी डू हैव द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. मल्टीप्लाई 4 लीटर 100 मिलीलीटर बाय 15.
तो जब भी हम करते हैं तब हमें सिंपली बात ध्यान में रखनी है, लीटर का यहाँ पर, मिलीलीटर की वैल्यू यहाँ पर, 4 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा आपका 100। मल्टीप्लाई करना है आपको 15 से। सो इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 15 देन इट इज़ सो मच ईजी फॉर यू। ओके, सो 15 zeros are zeros, 15 zeros are 0, 15 ones are 15. So 5 is here and 1 goes to the carry forward. Okay, 15 fours are 60. Okay, 60 plus 1, that is the 61. So our answer is the 61 liter and 500 milliliter. Now second that example, that is the 41 kilogram to the 417 meter. 41 kilometer to the 470 meter, multiply by 21. So that again you can do like that, kilometer here and the meter here. So 41 and 417 here, multiply with number 21. टेबल पता नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करना है हमें, यस वी नो दैट, जगह छोड़नी यहाँ पर, और यहाँ पर 1 7s are 7. ओके, 1 1s are 1, 1 4s are 4, 1 1s are 1, 1 4s are 4. Now again 0 here, 2 7s are 14, 4, 1 goes to the carry forward, 2 1s are 1 plus 1, that is a 3. Okay, 2 4s are 8, 2 1s are 2, and 2 4s are again 8. So we have to add that value. So our answer is the 7 plus 0, 7, 4 plus 1 is the 5, 4 plus 3 is the 7, 8 plus 1 9, 4 plus 2 6, 8 as it is. So our answer is the 869 kilometer and 757 meter. Okay students, so now let us move ahead and do some more multiplication. So here we do have the kilogram and the gram example. So that is the kilogram here and gram here. So 49 kilogram and 450 gram. We have to multiply the value by number 27. So let us do the multiplication. Okay, so 7 zeros are 0, 7 5s are 35. So you have to write down the 5 here and 3 goes to the carry forward. ओके, कैरी फॉरवर्ड वाले नंबर हमें बाद में इरेज करने हैं ताकि शॉर्ट में हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो जाए. ओके, सो नाउ 7 4s are 28, 28 plus 3, 28, 29, 30 and 31. So 1 is there and again 3 goes to the carry forward. Now 7 9s are 63 plus 3, that is the 66. So 6 is there and again 6 goes to the carry forward. 7 4s are 28, 28 plus 6, 28, 29, 30, 30 and 4, 34. So our answer is the 346 kilogram and 150 gram. But again we have to multiply with the number 2. So we have to put 0 over here and ये जो ऊपर के carry forward है इनको हम करेंगे रब. Okay, now we have to multiply with the number 2. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, so 0 here, 1 goes to the carry forward. 2 4s are 8 plus 1 9. Okay, 2 9s are 18, so 8 is there and 1 goes to the carry forward. 2 4s are 8 plus 1, that is the 9. So our answer is the so carry forward number हम ये करेंगे. Now we have to add that two numbers. 0 plus 0 0, 5 plus 0 5, 1 plus 0 1, 6 plus 9, that is a 9 plus 6 is the 15. So 5 is there, 1 goes to the carry forward again. Then 8 plus 4 12, 12 plus 1 13.
3 is there, 1 goes to the carry forward. Then 3 plus 1 4 and 9 plus 4, that is a 13. So 3 is there and 1 is there. So our answer is the 1335 kilogram and 150 gram. कैरी फॉरवर्ड वाले नंबर हम क्या करेंगे, रब करेंगे. नाउ दैट इज आवर आंसर. नाउ you can do easily that example at your home because it's a so example. Simply you just write like that, liter here and the milliliter here, and take proper gap between that so you can understand it how to solve that examples properly. Okay, so now let us move ahead to the page number 7070. Here we do have again the division examples are there. So here we have to divide that value, but उसके लिए whenever we have to divide then we have to convert the value into the 1 unit. अभी यहाँ पर क्या है कि 5 किलोग्राम है और 876 ग्राम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, and then we have to divide by the 26. Okay, let us do the division. First we have 5 kilogram and 876 gram. So convert it. So 5 kilogram means 5 into 1000, that is the 5000 gram. So our answer is the 5 kilogram and 876 gram, that is equal to आएगा हमारा 5000 plus 876. So answer is the 5876 gram. Okay, and then we have to multiply the value with the 26. Now let us do the we have to divide by the 26. Let us do the division. 5876 divided by 26. But you don't know the table of 26. Then how could we make a table of 26? It's easy. We know the table of 2 and table of 6. Write down the table. 2 1s are 2, 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20. We also know the table of 6. 6 1s are 6, 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 16. So you can easily make a table of 26 now. 26. So here 2 I can write 4 plus 1, that is the 5, 8, 6 plus 1, that is the 7, 4, 8 plus 2, that is the 10, then 0, 10 plus 3, that is the 13, then again 6, 12 plus 3, that is the 15, then again 2, 14 plus 4, that is the 18, again 8. Okay, so 16 plus 4, that is the 20. Okay, again 4 is there. 18 plus 5, that is the 23, and 0 and 20 plus 6, that is the 26. So that is our table. We know the table now. 26 1s are, 26 2s are. So now 26 2s are, we can take first 26 2s are, that is the 52. Let us do the subtraction. 8 minus 2, that is 6. Then taking 7 down. So again we have to take the 2s are. 26 2s are, that is the 58. Okay, do the subtraction. 7 में से तो 8 नहीं जाते, so you have to give the number. So here is the 5, is the 17. 17 upon minus 8 कितने जाते हैं हमारे? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, that is the 9 and 0 is there. Again taking down the number 6.
Okay, by mistake we have taken the 58. It's a 52. So 7 minus 2, that is the 5, and 6 minus 5, that is the 1. Taking again the 6 down, so that is a 156, and we know that 26 6 are 156. So here our division completed, 0 0 and the 0. So our answer is the 226. So you can write down here, that is the 5 kilogram 876 gram divide by 26. So the answer is the 226. Okay, so our answer is the 226, that is the gram. Okay, similarly you have to solve that one example. Now here making a table of 13, it is easy. Okay, so and you have to also by heart a table of 13. So here we have to first convert the 11 liter into the milliliter, and then you have to divide that value. So that is example for your homework part. Now let us do the division of that liter part. I will show a division over here. So here we have to divide 3 liter 633 milliliter by 21. Okay, so let us do that division, but first we have to convert the 3 liter value into the milliliter. So we have 3 liter, that is equal to 3 into 1000, that is the 3000 liter. So hence 3 liter 633 milliliter, we will get the value 3000 plus 633, that is our answer is the 3633 milliliter. So let us do the division. So 3633 divided by 21. So making a table, it is so easy, as we know that 2 का टेबल तो आपको कम्प्लीटली आता है. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20. और 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So it is so easy to make a table. 21 42 63 84 105 126, okay, 147 168 189 and 0 20 plus 1, that is the 21. So your table is formed here. It's so easy to make a table. So 21 ones are 21, we can't take. 36 is the number, so we have to take 21 ones are. So 21 ones are 1. 6 minus 1 is the 5. 3 minus 2 is the 1. Again taking the 3 down, we do have 153. So we know the 26 sevens are 26 6 are 26 sevens are 147. Okay, 147. So here we have to do the subtraction. 13 minus 7, so यहाँ पर तो नहीं जाता, तो यहाँ पर हम करते 13. It's a number 4. So 13 minus 7, 7 plus 6, 13. So 6 is number there. 4 minus 4 is the 0. 1 minus 1 is the 0. So again take the numbers 3 down. So here 63, and we know that 21 3s are 63. So 3 minus 3 is the 0. 6 minus 6 is the 0. So here we get the answer, that is the 173 milliliter. So we can write down here, that is the 3 liter 633 milliliter divide by 21. So answer is the 173
milliliter. Okay, so similarly here we have to solve that example. We have to divide by number 1, but its answer is so easy. You know that if we divide any value by the number 1, then answer is the same number. So here we can write down quickly answer, that is 27 kilometer and 6 meter divided by 1, that is the answer is the same number, 27 kilometer and 6 meter. Okay, that is your answer. Now let us move ahead to the some application part. Some word problems are there, so let us solve some word problems. The distance between two places is 12 kilometer, 250 meter. What is the total distance covered by taxi in 3 round trips? Okay, so यहाँ पर क्या कर रही है, टैक्सी की डिस्टेंस कवर कर रही हैं, लेकिन 2 प्लेसेस का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है, 250 मीटर है. तो ये एक जगह से दूसरे का डिस्टेंस है. लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी. लेट ए एंड बी आर 2 places. So okay, so in 1 round distance covered in 1 round. तो 1 राउंड में कितना होगा यहाँ पर, वो जाने के वक्त का और आने के वक्त का, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 12 किलोमीटर एंड 250 मीटर. सो ये कितना होगा हमारा, लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लिकेशन. सो वेन एवर वी डू द मल्टीप्लिकेशन, सो दैट मल्टीप्लिकेशन यू मस्ट हैव टू डू ऑन द रफ वर्क. लेट I am doing on that rough work, that is 12 and the 250 meter. You have to multiply by the 2. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So your answer is the 24 kilometer and the 500 meters. So answer is the 24 kilometer and 500 meter. So distance covered in 3 round. तो 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज 3 इंटू 24 किलोमीटर एंड 500 मीटर. सो अगर हमें इसका क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इन सभी वैल्यूज़ को. लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन ऑन द रफ पेज. So whenever you do the multiplication, you will get the answer, that is the 73 kilometer and 500 meter. Okay, so in this example you have to do the multiplication. Okay, let us move ahead to the next example, the example number 18. Sheila has 4 kilogram of onions. She wants to put them into boxes of 80 gram each. Okay, how many boxes will she need? Okay, so for that we have to convert the onions, that kilograms value, into the grams value, and then we have to divide by the number 80. Okay, so let us do that example. 4 kilograms means 4 into 1000, that is the 4000 grams onions. Okay, and each boxes we have to put 80 grams. Each box need to put 80 gram. So number of boxes she need, that is equal to 4000 gram divided by 80. So whenever we have to do that division, so whenever the division is like that, we have to cut that 0. So you have to divide only 8 by 400 by 8. So 8, we know that 8 1s are 1, 8 5s are 40, so 5 and 0.
So your answer is the 50. So number of boxes required, she need the 50 boxes. Okay students, so let us move ahead to the example, that is the question number 19. Mohit has a vessel with 5 liter 882 milliliter milk in it. He pours it equally into 17 glasses. What is the quantity of milk in each glass? So here you have to divide the value, that this value we have to divide by the number 17. So we will get the answer of that question. So let us do that example. So here our total milk is the 5 liter and 882 milliliter. सो 5 लीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा 5000 में, क्योंकि लीटर का हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो 5 लीटर मीन्स 5000 मिलीलीटर प्लस 882 मिलीलीटर. सो आवर आंसर इज द 5882 मिलीलीटर. दैट इज़ अवर टोटल मिल्क. सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ईच ग्लास, तो हर एक ग्लास में हमें कितने ग्लासेस है ऐसे हैं, दैट इज़ द 17 ग्लासेस है. सो 17 ग्लासेस में अगर पुट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5882 डिवाइड बाय 17. Whenever you do the division process, then you will get the answer. Answer is the 346 milliliter. Okay. एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जगह कम है, तो आप हाफ पार्ट इसके लिए करो और हाफ पार्ट इसके लिए करना है आपको. एंड यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑन अ रब पेज. यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, रब पेज पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कंप्लीट कर देना है. नाउ let us move ahead to the next question, that is the example number 20. So in this example, here the first A1 example, that is the Reena has 8 kilogram of sugar. She wants to put the sugar into bottles, each with a capacity of 50 gram. How many bottles will she need? Same example is there. So that example I am giving you for the homework part, and next example I will show you. Shami has 3 liter of juice. He wants to pour 40 ml in each glass. How many glasses will he need? तो उसको कितने ग्लासेस लगने वाले हैं. सो मिलीलीटर के एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पर हाफ पार्ट में. सो हियर द B1 एग्जाम्पल, Shami has 3 liter of juice. So total juice that is the 3 liter, that means 3000 milliliter. So हमने उसको कन्वर्ट किया. whenever you convert the liter to the milliliter, we have to multiply by the 1000. So 3000 milliliter. So he wants to pour 40 ml in each glass. In each glass, how much ml is there? In each glass there is 40 ml. So number of glasses he need, that is equal to 3000 डिवाइड बाय आएगा आपका 40. सो यू हैव टू डू द डिवीजन. सो ये आपकी डिवीजन होती है यहाँ पर. सो जब भी ऐसी डिवीजन होती है आपको, तो ये 0 0 आपका होता है कट. सो यू हैव टू डिवाइड 300 बाय 4. सो ये तो सिंपल डिवीजन आप कर सकते हैं यहाँ पर. नॉर्मली ये पर भी आप कर सकते हैं 300 डिवाइड बाय 4. सो वी नो दैट 3 नहीं तो 30 होता है यहाँ पर. सो 30 इज नंबर. सो 4 1 जार 1, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28 and 4 8 जार 32. So we can take the number 4 7 जार 28. So 30 minus 28, that is the answer is the 2. So taking 0 down, 4 5 जार 20. So our answer remainder is the 0. What is our answer? Our answer is the 75. So number of glasses he need, that is the 75. So number of glasses need, that is equal to 75 numbers. Okay. So that is the 75 numbers glasses here needed. Okay students. So that example you have to solve for the homework part. Now let us move ahead for the higher order thinking skill example. Here the example 21 is there. A container can hold
10 liter to 120 milliliter of juice in it. What is the total capacity of 12 such a containers? Give your answer in milliliter. तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यस, हियर वी हैव टू multiply that value with the number 12 and then we can answer that question. So let us first write that solution. So here container can hold 10 liter to 1020 milliliter. So we have to convert the 10 liter into the milliliter, that is the 10 liter means 10,000 milliliter plus 220 milliliter, that means 10,220 milliliter. So capacity of 12 such a container, that is 10,220 milliliter multiplied by 12. So whenever we do the multiplication, we will get the answer like that, 1,22,640 milliliter. So students, here we need to do the multiplication and we have to do the multiplication on a rough page. Okay, now let us move ahead to the last example. So here the long answer question, example number 22nd. The distance between two places is 3,735 km. Shoaib travel a fifth of the distance by train, paying rupees 15 per kilometer. He then hired a bus and traveled 4/5 of the distance by paying rupees 22 per kilometer. What amount did he spend on traveling? तो यहाँ पर हमें ट्रैवलिंग की अमाउंट निकालनी है. पहले तो देखो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें से फिफ्थ डिस्टेंस मतलब 1/5 डिस्टेंस कवर किया है ₹15 के रेट से, और यहाँ पर देन 4/5 जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसने कवर किया है बाय पेइंग ₹22 पर किलोमीटर से. सो लेट अस डू दैट एग्जांपल एंड फाइंड द सॉल्यूशन. सो हियर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दैट इज 3,735 किलोमीटर. 1/5 डिस्टेंस शोएब ने कवर किया था ₹15 पर किलोमीटर के लिए रेट से. तो 1/5 अगर हमें निकालना है तो हमें 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3,735 करना है. वेन एवर वी डू द, यहाँ पर हमें डिवाइड करना होता है 3,735 को 5 से. वेन एवर वी डू द डिवीजन वी विल गेट द आंसर, दैट इज द 747 किलोमीटर. सो अगर कॉस्ट निकालनी है इसकी, सो कॉस्ट ऑफ 747 किलोमीटर बाय ये रेट है ₹15 पर किलोमीटर, तो उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ₹15 से. सो वी विल गेट द वैल्यू ₹11,205 वेन एवर यू डू द मल्टीप्लीकेशन. सो अगेन बट उसने आगे का जो डिस्टेंस है दैट इज द 4/5, दैट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस. ही ट्रैवल बाय अ बस. सो 4/5 कितना होगा हमारे 3,735 किलोमीटर का, सो हम निकालेंगे यहाँ पर. सो इट इज़ द 2,988 किलोमीटर. सो 2,988 किलोमीटर उसने ₹22 किलोमीटर के रेट से क्या किया यहाँ पर ट्रैवल किया. सो दैट इज कॉस्ट इज द 2,988 मल्टीप्लाई बाय 22, दैट इज ₹65,736. सो टोटल अमाउंट ही स्पेंड ₹11,205 plus ₹65,736, that is ₹76,941. So students, here you have to do the division also and the multiplication also. So that is the last example. Again here you do have some practice questions. That example you must have to solve in your mathematics notebook. Take care of yourself students. Bye bye for now. Take care.